Hello everyone. I hope you all join us at Gardengram live chat today, which is series 2 on summer care gardening. So as people are joining, so our guest today, Pratisha Hazarika, has joined, and we will pull her in our live chat soon. Just waiting for you all to get this notification and join us. I hope you all are doing good. And today is Saturday, and a lot of you have offs, and you have a long weekend, and a lot of you are at work and might be commuting at this time. So I hope you all make some time and you're able to join us. I know it is summers, and summers can be very pressure course for you all with none other than Pratisha Hazarika, who will be joining us at the soonest. And here she is. Hi, Hi, dear. Pratisha, how are you? I'm good. I'm perfectly fine. Enjoying this summer, welcoming it with grace Yeah. and with gratitude. So I'm perfectly fine. What about you? I'm doing good. It's so hot here, Pratisha. How is it out there in Assam? In Guwahati, yeah, it's in Guwahati. It's all the same. It's really very hot. Because in Assam the humidity rate is very high, so it's really hot. But in between there are some showers, so giving relief to us as well. These plants. That, So are our friends yes, joining up? yes. So many of them are joining up today. I'm Yes. so happy. This only points out to the Okay. that they like what they see and what they hear. So That's what. That's yeah. what. And we love to give them that. We love to give them knowledge along with fun and joy, so that it's not at all a boring session, right? Absolutely. It's never going to be boring Hi. when we are doing it together. That I can assure you. Exactly. It's all full of fun, and like the conversation, it goes That on and on. So it's like I so good. It feels so absolutely. good. So to all those Shamal. who are joining, right, I will quickly introduce Pratisha, who is our special guest for today. Although she needs no introduction by now, but still, I'll just let you know that Pratisha is an amazing plant parent and a social influencer. She's mom to two amazing, beautiful kids, and also Shimmer. Okay, and as I last chat also, Pratisha was working full time for 14 years, and then she dedicated her time to helping Mother Earth recuperate and spread this sort of awareness among all of us about Mother Nature, greenery, take up plant parenting, take up other causes, social causes, and she works actively through her different interventions offline and online through a page also, which is Plant underscore 12, which you can all follow. Underscore You will 12. see that there are so many interesting and useful bits of information on gardening. For example, how to repot a particular plant, how to take care of them, where to place your plant, and not to say how to aesthetically place your plants to make them look very beautiful. Okay, so all of this you can find out there, Yes. and today we will be talking with Pratisha on something which is of critical importance to all of us. तो जैसा कि हम जानते हैं समर्स में ऐसे ही काफी मुश्किल होता है, हमें भी काफी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है बिकॉज ऑफ द हीट वेव, और इसमें काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत टायरिंग फील होता है. तो ऐसे ही मतलब जैसे हमारे पेट्स होते हैं, रास्ते में स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, हमारे प्लांट्स, गार्डनिंग बहुत मुश्किल होती है, एंड वी ओनली विश कि काश हमें बिल्कुल अच्छी से कोई टिप्स बताए, कुछ हैक्स बताए, केयर रूटीन बताए, जिससे हम अपने प्लांट्स को बेटर फील करा सकें. एंड फॉर दिस पर्पज, ताकि हम अपनी Exactly. गार्डनिंग को अफेक्ट नहीं होने दें,
summer की वजह से, heat waves की वजह से, we have Pratisha joining us today who will be talking with us extensively about what plants to get during summer season, how to take care of them. Summer season में क्या होना चाहिए watering, frequency of your plants. So without further delay, we will straight dive into our session today. And I see that a lot of you have joined and we are all set to move forward. So, Pratisha, please, first of all, please share your experience with gardening in summers. How is it for you? आप किन चीजों का ध्यान Yeah. रखते हो? And with that, we will go into. Yeah, like first to start with, like when I was a beginner, तो क्या था समर में, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग इतने सारे चेंजेस आए थे. आई डिडंट नो एंड माय प्लांट्स दे वर ऑल बर्नड अप. मुझे नहीं पता था कि मतलब ना कि शेड में लाना चाहिए, कि समर्स में उन लोग को थोड़ा सा शेड देना चाहिए. They were just in my balcony and eventually I saw May, June, July, August and September का जो धूप होता है in Assam, it's extreme. And all my philodendrons, all my pothos, their leaves started burning and drying up. So I got so scared. Then I thought, what is the solution? I discussed with my community people and then I know that they need shade. That is very important. अगर आपके घर में मतलब मेरे जैसे balcony है, I ordered from Amazon जो shades मिलते हैं. So immediately I got it from Amazon. जो ऐसे blinds वाले, folds वाले मिलते हैं ना, जो दिल्ली वगैरह में आप देखोगे balconies में रहते ही है. So I had put that in my balcony and terrace पे भी I have a small area जहाँ पे green shade लगाया हुआ है. So those plants who are very fragile, please see to that you take them somewhere where indirect sunlight is there, because see, harsh sunlight can only be tolerated by flowering plants. And plants, those are big, but plants which are like philodendrons, like pothos and all, their leaves are very fragile. So they tend to get burned. येलो पर जाएंगे, एकदम बर्न हो जाएंगे एंड दे विल उनके स्टेम्स सिकुड़ जाएंगे. सो इट इज वेरी important that you see the area. अगर आप देख रहे हो बहुत ज्यादा धूप आ रही है, either give it a cover, a permanent shade like I have done in my balcony. You can bring those blinds or you can put a green shade, और आप हल्का सा पतला सा दुपट्टा या कुछ ऐसे भी देके when the extreme heat is there, दोपहर के टाइम पे आप रख सकते हो. If that is whichever way is convenient, you have to give a shade to your plants. That is very important during summers. And also see to that your watering schedule should be a bit frequent than your winter schedule, because in summer the heat absorption is very, very high. So you have to put a check that your plants are not dehydrated. And also you should not overwater, and you should always check that stagnant na rahe pani. Because what you do now, you pour water and then जो पानी आप नीचे प्लेट में रखते हो, always remember to put a plate underneath the pot. So क्या होता है, बहुत जन पानी डालते जाते यहाँ पे ना गंदगी हो जाती है. So always remember to throw away the extra water and keep your garden clean. Like set a schedule, like 2 हफ्ते में एक दिन I will clean my garden where there will be no stagnant water and all, because that will again lead to pests and mosquitoes. So always put that on check. Okay, okay. Wow, Pratisha. So you must have noticed कि आप जितने देर बोल रहे थे, the whole time you were speaking, I was just noting down. So because इसमें Yes, yes. करके आए हमारे लिए, I think that are very useful. So starting with the most point, आपने बोला कि it is very important to have a schedule. आप summers में especially, ये schedule वाली बात तो हमेशा ही मतलब लागू है, but summers में especially please have a schedule. Like Pratisha mentioned, every 2 weeks, clean your garden. Just throw away the extra water. वो stagnant नहीं होना चाहिए. For health purpose also, it is so important, कि वहाँ पे mosquitoes नहीं ब्रीड करे, बिकॉज जहाँ एक गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स का बहुत ही ज्यादा हमारे हेल्थ बेनिफिट्स है, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम ध्यान नहीं रखें तो वो हेल्थ हैजर्ड्स भी साथ में ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर स्टैग्नेशन. सो दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिशा. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट.
अपार्ट फ्रॉम That's दिस प्रत्युषा ने एक बहुत ही प्रैक्टिकली एक पॉइंट पुटअप किया अपनी जर्नी के साथ कि जो फ्रेजाइल प्लांट्स होते हैं उनको हार्श सनलाइट में बहुत दिक्कत होती है. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी स्ट्रगल की प्लांट्स के yes. लीव्स येलो हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं प्लांट में. वो Mm. किन वजह से होती है? सो इन समर्स द हार्श सनलाइट माइट बी वन ऑफ दोज रीजंस कि क्यों आपके प्लांट सफर, Yes, क्यों उनका हेल्थ, very much. राइट. एंड देन Mm. इन्होंने ये भी Mm. बताया कि फ्लावरिंग प्लांट के लिए सनलाइट अच्छा होता है एंड दे कैन टॉलरेट. सो एवरीवन, fruit Mm. plants and flowering plants, Oh. please ensure you give adequate sunlight to them. Apart from this, इन्होंने कुछ Mm. practical tips भी बताए कि get shade for your balcony and use that for your plants ताकि वो sunlight उन पे direct नहीं जाए और वो heat wave के समय protected रहे. As Mm. Pratisha mentioned, it's available on Amazon as well. And for those of you who want like Mm. practical simple tips, आप अपने दुपट्टे को भी use कर सकते हो. So actually that's the beauty, Pratisha, when we Yes. talk to you कि हमें ना ये simple DIY tips मिल जाते हैं. घरेलू हाँ, नुस्खे, घरेलू नुस्खे. I don't go for too much of absolutely, fancy stuff. these are So मेरे लिए important. These are घरेलू नुस्खे काम करके है. बिल्कुल. So with this, can you also suggest is कि हम समर सीजन में किन प्लांट्स पे फोकस करें? एंड इन केस जैसे कुछ लोगों के गार्डन में पहले से ही हर तरीके के प्लांट्स मौजूद हैं, तो उस केस में क्या करें और समर्स में स्पेशली गार्डन में क्या ऐड करें? समर्स में आई थिंक लाइक समर लाइक विंटर्स जब हम लोग बोलते हैं इट्स लाइक मोर ऑफ सीजनल फ्लावर्स, राइट. मतलब ज्यादा हम लोग सीजनल फ्लावर्स पे फोकस कर लेते, एकदम पिटोनियाज वगैरह लेके आते हैं. बट या समर में भी बहुत सारे फ्लावर्स है. अगर आप लोग फ्लावर्स के शौकीन हो देन यू कैन गेट रोजेस एंड मैरीगोल्ड्स एंड ऑल. देन एडेनियम्स आर आल्सो देयर, सनफ्लावर्स आर देयर. एंड आई वुड आल्सो से वन थिंग फॉर समर, आप लोग जो पॉट लेते हो ऑलवेज सी सिरामिक पॉट और अ टेराकोटा पॉट में पानी एब्जॉर्ब करता है, सो द प्लांट स्टेज कूल. ओके. पर अगर आप प्लास्टिक पॉट लेते हो वहां पे आप पानी डालते हो देन प्लास्टिक में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सो वो सॉइल बहुत टाइम सॉगी रहता है. तो ऑलवेज बी केयरफुल बिकॉज अगर आप टेराकोटा यूज कर रहे हो इट्स रियली वेरी गुड. ceramic it's very good because they absorb the water and drains out. पर प्लास्टिक में क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, स्टैग्नेंट होता है. तो इसीलिए जो जो प्लांट्स आप प्लास्टिक पॉट में रख रहे हो please be careful while watering it. Don't over water. Always I say put your finger in the pot and see if it is moist, then you don't have to water. But if the topsoil is dry, then you can water it. Okay. And then you can go up with veggies also. Summer, like I have a balcony, so I am not too much into veggies. But if you have a huge space, you have a huge terrace and all, then you can definitely go for dhanias and brinjals and cucumbers and all those things in grow bags. And summers, like all plants summers are only harsh with the phyllos, the leafy ones. So we have to be careful with the phyllo category. Otherwise, flowering plants are good for summer. Jasmine and all, they love sunlight. So we don't have to worry for that. Lemon and plants, they all love sunlight. That is not harmful. But for philodendrons and phyllos and pothos and monsteras and all, we have to be careful. So we have to bring them to the shade. Either we have to give them a shade or we have to bring them to a place where there is shade. No harsh sunlight after 12 o'clock. Okay, okay. Okay, Pratisha, like again, so yes, Pratisha, actually you've made life easy for some of us. When you say, कि philodendrons, pothos, because these are the plants that are commonly available. लोग अपने घर में because of their Yeah. beauty, the ease of their maintenance, prefer करते हैं और उनको अपने घरों में जरूर लगाते हैं. A lot of beginners also start with pothos and these plants, snake plant and everything, है ना? तो उसके लिए आपने मेंशन Yes, किया कि उनको शेड देना जरूरी है और शेड में रखें तो बेटर है. exactly. दैट Yeah. If you have a big tree, if you have a like घर में बगीचा है, बड़े बड़े प्लांट्स है, so उसके अंदर भी नीचे भी आप रख सकते हो. तो क्या होगा, ट्री के शेड में वो लोग रहेंगे. So that's a beautiful place to for them. बारिश भी होगा तो हल्के से नहीं, डायरेक्टली नहीं गिरेगा. एंड इवन शेड भी माइल्ड शेड, मतलब बड़े ट्री के नीचे भी आप रख सकते हो.
another nuskha right there, very beautifully strewn. Thank you so much, so people who are hearing this, right? अगर आपके पास bigger trees हैं, bigger plants हैं, जिसके नीचे आप इनको shade कर सकते हो, तो Bigger plant. यूटिलाइज दैट स्पेस. सुंदर भी लगता है बिकॉज Yes. प्लांट्स टुगेदर. कुछ प्लांट्स को ह्यूमिडिटी पसंद है, क्लस्टर में उनको अच्छा होता है उगना. तो ऑल दीज पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा Yes, टिप है, exactly. right? And also I'll just quickly mention, because we have received a couple of inboxes since the time we have started talking about the slide, where people have mentioned कि उनके एरिया में समर्स अभी नहीं चल रहा है या नहीं है उनका, which is different from the summers in a lot of northern regions. So I will just like to tell all of you कि अगर आपका सीजन का डिफर कर रहा है, आपका क्लाइमेट डिफरेंट है, तो आप प्लीज उसके बारे में हमको लिखें, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी क्रिएट अ स्पेशल लाइव सेशन और अ वर्कशॉप लाइक दिस with you as well, right? So we understand कि इंडिया में काफी डाइवर्सिटी है, so we will be happy to talk about all these things. So please don't get disheartened that we are only talking about summer summers. We will talk about everything. You just come up with your queries. We are here to sort out all your issues. So guys, please write. You can write to Pratisha. You can write to us. Just there, right? Like क्या tips आपको चाहिए? And even now, अगर आपके पास कुछ भी सवाल है, मे बी इस चैट में हम नहीं उसके बारे में बात कर सके, बट एटलीस्ट आपके क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे. सो वी विल मेक श्योर कि हम किसी ना किसी फॉर्म में उसका इंफॉर्मेशन आप तक लाएं, because if you inbox us, then we'll also share those with Pratisha, so that she finds the useful topic she can publish on her wall as well, right? So with this perspective, please definitely, because they will be very useful for us to get what you exactly need. So now taking our chat further, last leg of this session, right? Pratisha ने also हमको बताया कि आप flowering plants लगा सकते हो, very beautiful plants. Adi ने बताया roses, marigolds, sunflowers. हम में से काफी लोग struggle करते हैं कि कौन से flowering plants लेकर के आए अभी. So this is perfect, guys. सुना आपने, just now go and get it and take care of it, right? And और एक बहुत important बात बताई उन्होंने कि जो pots आप इस्तेमाल करते हैं, it is very important कि you use the right pots, because terracotta pots, ceramic pots, they are porous. उसका material जो है उससे water की अच्छे से porosity से maintain होता है. So just get that, and there are some hacks that we can curate later. जैसे मान लो अगर आपने different material के pots हैं नहीं मिल रहे हैं, तो how can you ensure कि आपकी plant के लिए आप best environment उसमें provide कर पाएं. But the best option is to go for terracotta or these ceramic pots, right? So Pratisha, now just moving to the last leg of this session, okay, where can you generally tell us कि summer season में हमको plants में किस समय water करना चाहिए? Because this is one of the most favorite topic that all of our viewers have, कि हम किस समय water करें अपने plant को, and किस intensity से करें water. Summers में always off for the early morning, otherwise late evening. बीच में गर्मियों में नहीं, means like from 6 till 7 a.m. you can water your plants and water them thoroughly. जब मैं बोलूँ, like if this is the pot, you pour the water and you see that it gets drained out, ताकि सारा water सॉइल में एब्जॉर्ब होके निकल जाए. दैट मीन्स जो भी रूट्स ऐसे स्प्रेड आउट होके रखे हुए, दे आर ऑल मॉइस्ट. ऐसा नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा आप मत दो. आप जब आपको देना हो, एंड इफ यू हैव लेस अमाउंट ऑफ, व्हाट आई डू, मेरे कुछ प्लांट्स है जो मैं अंदर रखती हूँ. आई वाटर देम लाइक 2 हफ्ते में एक बार. आई टेक देम इन द वॉशरूम, आई टेक माई हैंड शावर, एकदम फुल ऑन शावर आई गिव देम thoroughly. To what are the benefits of that? Leaves clean हो जाते हैं, leaves में dirt नहीं रहता है, because cleaning the leaves are also very important. सारी धूल, everything in the pollution, everything gets accommodated in the leaves. तो ये leaves को हम लोग को साफ करने के लिए you have to be very careful. You have to take a tissue paper. I find tissue paper very easy because it is light. Cloths में क्या होता है, they are heavy, तो टूट भी सकता है. So with a tissue paper, just whip it, अच्छे से आप पोंछ दीजिए बोथ साइड्स. तो क्या होगा, पेस्ट नहीं होगा. दिस इज अ टिप. यूज टिश्यू पेपर्स while you are doing this. Wet tissue paper, or you can take muslin cloth, very soft cloth.
और यू कैन टेक कॉटन, पानी में भिगो के निचोड़ के आप अच्छे से प्लांट्स को आप पोछिए. So it is like the cleaning part, and then water it thoroughly so that next time when you water, the topsoil is dry and you water it properly. So either you do it in the early morning or in the second half after you are back from the office, or take Sunday. संडे तो सबका यूजुअली ऑफ रहता है, और जो भी सैटरडे संडे, तो ऐसा आप एक दिन लीजिए और 2 हफ्ते में रिमेंबर टू फर्टिलाइज इट. आई यूज सीवीड और नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि देखिए हम लोग को जैसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरनिक, फॉलिक एसिड वो सब चाहिए फॉर आवर बोन्स, फॉर आवर हेयर, फॉर आवर टीथ, एवरीथिंग वी टेक केयर, राइट. सो प्लांट्स को भी नॉट ओनली वाटर, बट वाटर के साथ उन लोग को फर्टिलाइजर्स भी चाहिए. So please try to get, अगर नेचुरल फर्टिलाइजर, you can use banana peel fertilizer, rice water, डाल के pulses water, don't throw it away. आप रख दीजिए, फिर उसमें प्लांट में जब पानी ठंडा हो जाता है, एग का पानी, when you boil egg, right? So I use all those nuskas a lot because घर में अंडे बॉईल होते रहते, आलू के छिलके निकलते ही रहते, चावल हम लोग रोज धोते ही है, तो जो भी पानी आता है ना, जो छोटे छोटे पॉट्स है उसमें आप डाल दो. So in a way they get the fertilizer also, moisturizer also, everything along with the water. And you can use seaweed. They are Amazon, they are available. You can contact Gardengram also. They have fertilizers with them, and their soil is also very good. I have used it, so there is no doubt about their soil and their products. So you can contact them as well. So watering is thoroughly water them. Don't confuse mat hoiye. पर अगर soil moist है तो please do not water. Only water when the top soil is dry. ओके ओके प्रत्युषा, जस्ट अ क्विक चेक इन. जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ प्लांट्स को आप बहुत ही थॉरली वॉश करते हो, यू टेक देम टू द वॉश, और वहां पे हैंड शावर से आप वॉश करते हो, तो हाँ, तो आप हम एक दो एग्जांपल्स दे सकते हो इन प्लांट्स की, ताकि पीपल कैन रेजोनेट कि ये आप कौन से प्लांट्स की बात करो, विच वेराइटीज ऑफ प्लांट्स. Yeah, yes, any variety, whichever the soil is. Syngonias हो गए, मनी प्लांट्स हो गए, मेरे monsteras हो गए, मेरे broken hearts हो गए, my succulents. मैं succulents एकदम rock dry हो जाता है, मैं तो टब में ऐसे पूरा डाल देती हूँ, then the bubbles comes up. That means the soil was very much dry. So that bubbles coming up only proves that it needed water. सो थर्डली आप वॉश कीजिए, बट उसके बाद ये नहीं कि 2 दिन बाद आप फिर से बाथरूम में जाके शावर दे देंगे, नहीं, फिर रॉट हो जाएगा रूट. देन यू हैव टू वेट फॉर अनदर 2 weeks अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेट, दैट की सॉइल सूखा की नहीं. अगेन व्हेन इट इज ड्राई, प्लीज गेट इट इनटू द शावर एंड गिव देम अ नाइस वॉश, अ गुड बाथ. इवन दे विल एंजॉय दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कभी मेंशन किया है, उन्होंने बोला कि थॉरली आप शावर मतलब अपने प्लांट्स को वॉश करोगे, बट जैसे आज किया है तो अब अपनी तरह अगले दिन ही उसको मत वॉश कर लो, वे नो 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 आपसे उसको नो नो 2 हफ्ते का समय दो एटलीस्ट, ठीक है. एंड उन्होंने एंड एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली. और उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस डिस्कस किया, बिकॉज अ लॉट ऑफ देयर इज सम मिथ आल्सो दैट आई हियर अ लॉट, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे वी आल्सो इंटरेक्ट विद प्लांट पेरेंट्स, राइट. सो देयर इज दिस थिंग वेयर पीपल से कि क्या फर्टिलाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पौधे खराब ना हो जाए या पौधे जल जाते हैं, सो एज प्रत्युषा मेंशन कि न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लाइक हमको भी जरूरत होती है एट टाइम्स, we take calcium and vitamins. So similarly, plants need what is Yes. important for them. And as Pratisha has mentioned, seaweed and all these things are very beneficial for your plant's health. Okay. And one important thing and disclaimer that I want to give right here for everyone. प्लीज अंडरस्टैंड, जो क्रॉप्स के लिए फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो हमारी गार्डनिंग में प्लांट्स के लिए यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो आई विल नॉट नेम पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स, पर कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड इन गार्डनिंग, पर वो फील्ड के लिए होते हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि आपके पौधे जल गए, बिकॉज उनका पावर डोसेज काफी हाई होता है, उसमें उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका कॉम्पोजिशन होता है. सो फॉर गार्डनिंग प्लीज गेट गार्डनिंग फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा, आपकी प्लांट्स को भी डिस्कम्फर्ट होगा. तो
नहीं, और मतलब मार्केट में इतने सारे फर्टिलाइजर्स निकल गए, एनपीके, फिर बोल लो आप, सॉल बोल लो आप, फिर नीम केक, मस्टर्ड केक, तो लोग सोचते कि सब कुछ डाल देंगे तो पौधा बड़ा हो जाएगा, बट दैट्स वेरी रॉन्ग। आप एक ही पर्टिकुलर चीज दो, बिकॉज अगर किसी में मस्टर्ड केक चाहिए, किसी में नहीं चाहिए, किसी प्लांट में अगर नीम केक चाहिए, किसी में नहीं चाहिए, तो आप पहले नॉलेज लो कि कौन से प्लांट में क्या फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड है, and do accordingly that. So have the knowledge. That's what I always keep saying. Gain your knowledge with workshops like this, going through the Google, talking with your friend community people, speaking to your seniors, and talking with your friends about that. It will help you. Absolutely. Absolutely. Thank you, Pratisha, for also, talking about this point about fertilizers. Because I think कि जितना important हमारे लिए सही plants और खरीदना और watering routine ये सब है, उतना ही important उनकी nutrition routine भी है ना? तो ये सब जब Yes, मिलती है, very so much. it is very useful. And also, just I will quickly mention for the ease, because जैसा आप लोगों को पता है कि Gardengram is a one-stop shop, right? It's one window front जहाँ पे आप सभी तरह की gardening requirements को पूरी कर सकते हो, including plants, pots. So we also have variety of potting mixes and plant-friendly, gardening-friendly fertilizers. Do check them out when you have time. And for the right nutrition, you can check out, do your research. आपको जहाँ से अच्छा लगे, get it there. But do take care of the nutrition needs of your plants. Sometimes you get the right nutrition in your kitchen Yes, also, and even that is not a bad thing, right? You should know how to balance it. आप अपने balance do. balance So that is very it. important. With this, Pratisha, we have come to the end of the session, right? And for this, I would only Oh, ask you a important question before wrapping this up. What would be your message, right, for the plant parents for this season जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कुछ parts में. So what would you like to tell our plant parents? I would just ask them, first thing, आप वो सनलाइट देखिए कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, उनको शेड पे लाइए, and keep hydrating yourself, keep hydrating your plants as well. But too much is also bad. Too much water for our kidneys also bad. Too much water for plants, roots are also bad. So keep a check, arrange a schedule, get a shade. If you have a balcony, then get a blind. You get it from Amazon, or you can search from your local stores. That's all. Like shade, schedule. Do not let water get stagnant, and then don't overwater. But yeah, do water thoroughly and fertilize them. Okay. Not too often, please. Don't fertilize. Also doesn't mean कि आप हर एक हफ्ते के बाद आप fertilize करोगे. No. Once a month is fair Very enough. important. Cool. So guys, before you all leave, an important announcement, okay, from us कि हम लोग next हफ्ते भी आने वाले हैं. Same time, same Yes. place at this live space, that virtual space that we have created for you. Get your friends. आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको इसमें क्या सुनना है, आपको आगे क्या बात करनी है, कम अप विद दैट. हमारे साथ आप भी इंटरेक्ट करो, बिकॉज ये सेशन आपके लिए है ताकि आप इससे फायदा उठा सको. एंड वी पोस्ट दिस लाइक ये लाइव चैट आपको हमारे वॉल पे तो मिल ही जाएगा, आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा. बट द जॉय ऑफ बीइंग इन अ वर्कशॉप लाइव जहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, Like that's incredible. yes. And also interacting with Pratisha. So अच्छी ब्यूटीफुल सिंपल नुस्खे भी बताते हैं वो, राइट? सो डू गेट योर फ्रेंड्स. yeah, come up with more of your friends. Okay, we'll see you next Saturday with some more tips, tipney from Pratisha's plant mom end. Absolutely, guys. With this, as Pratisha said, keep yourself hydrated. अपने को भी और plants को भी. चलिए, bye, Pratisha. Bye. Yeah, thank you so much. Thank Bye. you for this. Bye. Thank you.